everyone. Today our topic for discussion is legislative powers of president. Legislative powers of the president. So for the legislative powers of the president is concerned, my dear students, as we know that the president is the part of the parliament. President is a part of parliament. Part of parliament. President is a part of parliament. So president, we see that president summons. President summons. Prorogue. Summons. Prorogue. President summons the parliament. याद रखना. Prorogues the parliament and dissolves the Lok Sabha. Dissolves the Lok Sabha. So, prorogue means the discontinuation. Discontinue. President can discontinue a session. याद रखना, discontinue a session of parliament without dissolving it. Without dissolving it. So president can dissolve Lok Sabha. Powers for president. He can dissolve Lok Sabha. President can dissolve Lok Sabha, but not Rajya Sabha. Why? Kindly note that Rajya Sabha is a permanent house. It cannot be dissolved. President can dissolve. He can dissolve Lok Sabha, but not Rajya Sabha. But not Rajya Sabha. Why? So kindly note that Rajya Sabha is a permanent house. Rajya Sabha is a permanent house. Cannot be dissolved. Cannot be dissolved. Article 85 of Indian Constitution. So we see that the president can summon, prorogue, and also dissolve the Lok Sabha. Dissolve the Lok Sabha, but not Rajya Sabha. As we know that because Rajya Sabha is a permanent house, cannot be dissolved. Cannot be dissolved. Clear? So we see that the powers we are discussing, the legislative powers of the president. हम क्या discuss कर रहे हैं? Legislative powers of president. So president, we see that he can nominate. He nominates 12 members in Rajya Sabha. याद रखना. President nominates 12 members in Rajya Sabha. 12 members in Rajya Sabha. Nominates 12 members in Rajya Sabha. Prorogue, discontinue the session. And we see that he summons joint session of parliament also. Summons joint session. President summons joint session of parliament. Also summons joint session of parliament. So kindly note that speaker presides over the joint session of parliament. याद रखना, speaker presides over the joint session of parliament. Joint session of article 108. याद रखना, important article. President summons joint session of parliament. President summons joint session of parliament. So kindly note here that speaker presides over the joint session of parliament. ठीक है ना? So now we see that the president he nominates. President nominates 12 members. याद रखना, legislative, another important legislative power. President nominates 12 members. Nominate कर सकता है 12 members. 12 members in Rajya Sabha. In Rajya Sabha में. Rajya Sabha. The upper house of the parliament. Rajya Sabha is the upper house of the parliament. Total capacity of the seats कितनी होती है? 250. याद रखना, 250. So president he nominates 12 members in Rajya Sabha. In Rajya Sabha from the
persons with special. From the persons with special. From the persons with special. We see that knowledge or special knowledge or practical experience. और practical experience याद रखना, practical experience in the field of science, art, literature, science, art, literature, social service, ठीक है ना? So we see that the president nominates, कितने members nominate करता है president राज्यसभा में? 12 members, ठीक है ना? From the persons, किन में से? Special knowledge जिन्हें हो, practical experience in the field of science, art, contribution जिनका हो science में, art में, ठीक है ना? Literature and social service, ठीक है ना? Clear? So we see that the president, he also nominates, president nominates 2 members, nominates 2 members, 2 members in Lok Sabha. 2 members in Lok Sabha में कितने member nominate होते हैं? 2 member. Total capacity लोक सभा की, the House of the People, 550. Clear? 2 members. कौन नॉमिनेट करता है लोकसभा में 2 members? लोकसभा, the House of the People. President nominates 2 members. President nominates 2 members to Lok Sabha, from the Anglo. किनमें? From the Anglo Indian community. याद रखना, Anglo Indian community. Anglo Indian community से 2 member नॉमिनेट होते हैं लोकसभा में, ठीक है ना? प्रेसिडेंट करता है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है ना? सो वी सी दैट he can address, president can address either house or both houses of parliament together. President can address either house or both houses of parliament. Both houses of parliament. Either house or both houses of parliament. President can address in either house or both houses of parliament. Both houses of parliament. याद रखना, both houses of parliament together. Parliament together. Article 85. So special powers for president that he can address either house, both Lok Sabha as well as Rajya Sabha में address कर सकते हैं. Also we see that joint session of the parliament जो होगा उसमें भी address कर सकता है president. And president can send, and we see another power that the president, याद रखना, the president decides the question of disqualification. President decides the question of disqualification of the members. Disqualification of the members of parliament. Members of parliament with consultation with election commission. Election commission, याद रखना, election commission. So president, he decides the question of disqualification of the members of parliament with consultation with the election commission. Clear? So we see that this he can also, the president can send messages. Another, we are discussing legislative powers. The president can send messages to either house in respect of bills.
president can send messages. President can send messages. President can send messages in either house. In either house, in respect. Message to either house. To either house in respect. In respect of bills pending before it. Bills pending before it. Pending before it. ठीक है ना? So क्या है? तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? President can send messages in either house. In either house in respect of bills pending before it. Pending before a bill which is meant for the creation of new state. याद रखना. A bill which is meant for creation of new state. Creation of new state or altering the boundaries of the existing states or altering the boundaries of existing states, boundaries of existing states introduced in the parliament with the period introduced कहां पे इंट्रोड्यूस की जाती है? इन द पार्लियामेंट. इन द पार्लियामेंट विद द पेरियर परमिशन. विद द पेरियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. याद रखना. अ बिल, अगर कोई बिल विच इज मेंट फॉर व्हाट? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट की क्रिएशन हो जाएगी. कोई बिल पार्लियामेंट में हम जब स्टेट ऑल्टरिंग बाउंड्रीज के लिए कोई बिल अगर हम करेंगे इंट्रोड्यूस कहां पे? पार्लियामेंट में. सो वी कैन नॉट एंटर विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. सो परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द ऑल्टरिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट और वी कैन से दैट क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट. क्लियर? समझ आया? नो. अ बिल A bill becomes the act after the assent of the president. याद रखना. A bill becomes act after the assent of the president. After the assent of the president. याद रखना. कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगी जब तक प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं देगा. क्लियर? A bill becomes act after the assent of the president. So we can say that bill becomes an act. बन जाते हैं बिल जब क्या? We see that bill becomes an act after the assent of the president. When a bill passes in both houses of the parliament. जब कोई बिल पास हो जाएगी both लोकसभा as well as राज्यसभा, later sent to president. फिर प्रेसिडेंट असेंट करेगा एंड दिस जो बिल होती है वो क्या बन जाता है? एक्ट. ठीक है ना? क्लियर? सो वी सी दैट प्रेसिडेंट के पास पावर्स है ना. प्रेसिडेंट कैन असेंट द बिल. वी सी दैट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स. बिल पास इन बोथ हाउसेस. बिल पास हुई बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. फिर कहाँ गई? प्रेसिडेंट. ठीक है ना? सेंड टू प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट हैज पावर, एंजॉयज. वी सी दैट थ्री टाइप्स ऑफ पावर्स एंजॉय करते हैं रिगार्डिंग बिल्स. ठीक है ना? एक तो क्या? प्रेसिडेंट कैन असेंट द बिल. याद रखना, प्रेसिडेंट असेंट कर सकता है. प्रेसिडेंट कैन असेंट द बिल. प्रेसिडेंट कैन असेंट. प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड कंसेंट. याद रखना, विदहोल्ड कंसेंट. ऐसे ही विदहोल्ड रख सकता है. एंड प्रेसिडेंट कैन सेंड. प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है बिल को. रिटर्न द बिल. रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. सो प्रेसिडेंट रिगार्डिंग बिल्स एंजॉयज थ्री पावर्स, टाइप्स ऑफ पावर्स. क्या? प्रेसिडेंट कैन असेंट भी दे सकता है, विदहोल्ड भी कंसल्ट कर सकता है बिल पे, एंड ऑल्सो रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन.
एक्सेप्ट, याद रखना, एक्सेप्ट मनी बिल्स एंड अमेंडमेंट बिल्स। मनी बिल्स एंड अमेंडमेंट बिल्स को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है फॉर कंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल एंड अमेंडमेंट बिल फॉर कंसिडरेशन टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में नहीं भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। We see that president lays the also we see that when the bill, जब कोई बिल पास हो जाएगी, रिटर्न कंसिडरेशन के लिए भेजी गई, पास हो गई, फिर वापस आ गई, ठीक है ना। सो वी सी दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न, अब उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ऐसे दे सकता। तो रिटर्न द बिल, वो ऐसे विद होल्ड, अब उसको इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेसिडेंट को ऐसे देना ही देना है, ठीक है ना, क्लियर। सो वी सी दैट Ambedkar specifies that Ambedkar specifies that the office of the President of India was similar to that of the King of England. We see that of the King of England under the English Constitution. Ambedkar specifies that what? Ambedkar remarked that the office of the President of India was similar to that of the King under the English Constitution. So we see that the president lays he can raise the reports of CAGE, Comptroller General of India. President lays the reports of CAGE, UPSC, Union Public Service Commission, Finance Commission before the Parliament. ठीक है ना। So this was all about the legislative powers of the president. So next video में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।